Here we have to add hours of first column and minutes of second column to display time. To do this, type equal to sum bracket time bracket, and for hour we will refer first column cell, and 00 for minute and second, close bracket, now comma, again time bracket, then 0 for hour and refer second column cell for minute, and again 0 for second, bracket close. Format of numbers to currency. To do this quickly, select the range and press Ctrl plus Shift plus 4 and it's done. If you want to change the currency, select the range, press Ctrl plus 1, go to currency and select the currency like this. Thank you. Follow me for daily Excel tips. Hi guys, suppose you have a data like this and you have to bring it to a clean presentable format. Let's see how to do it quickly. Type formula equal to proper open bracket trim open bracket, refer the cell where your text is present and close both brackets. Hit enter and it's done. Follow me for daily Excel tips. Hi guys, do you know how to apply auto border like this? Let's see how to do it quickly. First select the columns where you want to apply auto border. Now go to conditional formatting and click new rule. Now in the conditional formatting window, select use a formula to determine which cells to format. In the formula bar, select the first cell of the range. Now press F4 twice to freeze column. Close formula bar, then click format. Now go to border and click outline. Press OK and it's done. Follow me for daily Excel tips. Hi guys, do you know how to apply auto border like this? Let's see how to do it quickly. First select the columns where you want to apply auto border. Now go to conditional formatting and click new rule. Now in the conditional formatting window, select use a formula to determine which cells to format. In the formula bar, select the first cell of the range. Now press F4 twice to freeze column. Close formula bar, then click format. Now go to border and click outline. Press OK and it's done. Follow me for daily Excel tips. Hi guys, in this video we'll see how to create a dynamic donut chart like this. First select the data, go to insert tab, click pie chart and select donut. Resize chart as per your need. Click on the chart and again go to insert tab. Select text box. Now draw a text box over the chart. Double click on the text box and when you see the cursor blink, go to formula bar, type equal to and select the cell which you want to display dynamically. That's it, it's done. Follow me for daily Excel tips. Hi guys, in this video we will see how to extract the numbers after hash from these user IDs. It is very easy to do in latest Excel version using text after function. Type equal to text after open bracket your text cell address hash in double quotes and it's done. But for users with older version of Excel, this function is not available. We'll use write, len and find function to extract our number. Len will give us the total number of characters in the cell. Find will give us the location of hash. If you take the difference of these two, you will get how many characters we need to extract using write function. So the final formula would be like this, as displayed here on the screen. Thank you. Follow me for daily Excel tips. Hi guys, with this dataset we have to make a bar chart like this, where values bigger than 1 billion are shown in billions, while the values smaller than 1 billion are shown in millions. Let's see how it's done. First, let's select the first 5 values which are bigger than 1 billion. Press Ctrl plus 1. Go to custom in the format cells dialog box. Now in the type section, type $sign in double quotes followed by space, then 0.0 followed by 3 commas, then space and then B in double quotes. Similarly, for the remaining values in millions, we will type $sign in double quotes followed by space, then 0.0 followed by 2 commas, then space and then M in double quotes. We now have all the values in the desired format. Now select the data, go to insert tab and select bar chart. Your preliminary chart is ready. Now to insert data label, select chart and go to chart design tab.
click on the add chart element, select data label like this. Now we need to rotate these data labels to make it look better. So select any label and right click. Now select format data labels. Go to text direction in the size and properties tab. Choose the vertical direction and it's done. Follow me for daily Excel hacks. Hi guys, in this video we will see some of the most important selection shortcuts. To select entire column, press Ctrl plus a space. To select entire row, press Shift plus a space. If you want to select all the data below a cell, press Ctrl Shift down. To select all the data above a cell, press Ctrl Shift up. To select all the data to the right of a cell, press Ctrl Shift right. To select all the data to the left of a cell, press Ctrl Shift left. To select all the data in a table, press Ctrl plus A. To apply filter to a selection, press Ctrl plus Shift plus L. To check all the stats of your workbook, press Ctrl plus Shift plus G. Thank you. Follow me for daily Excel hacks. Guys, can we look to the left of lookup value? If you think no, then keep watching. Here we have to find out the cost of an item by looking up item name. However, VLOOKUP would work if you bring item column in the left and cost column to the right. So we will tweak the formula a little bit by using if function with the array. Type equal to VLOOKUP, lookup value, comma, if, then 1 comma 0 in curly bracket in place of logical test. Select the second column for value of true. Then select the first column for value of false. Close bracket. This will basically reverse the table for this formula in the backend. So now in the reverse table, cost will be in second column. So for column index, type 2 and 0 for exact match. And it's done. Follow me for daily Excel hacks. If you have any doubt, shoot it in the comment section. Hi guys, it's 29 December today. If you want to enter today's date in a cell, press Ctrl plus semicolon. If you open this workbook tomorrow, the value in the cell will remain 29 December. However, if you want this value to update itself every day, then type equal to today followed by bracket. Now this cell value will change every day. That is tomorrow this cell value will be 30th December. If you want to enter the current time, press Ctrl plus Shift plus semicolon. Again, this will be a static value of time. If you want to enter time which updates automatically, then type equal to now followed by a bracket. This will be both date and time. To change this to only time, press Ctrl plus 1 and select the time format as per your need. You can also experiment the now function with text function like this to display date or time. Save this video or take a screenshot here for your future reference. If you found this useful, please let me know in the comments. Thank you. Follow me for more Excel hacks. जब कभी आपको एक्सेल में टेबल इंसर्ट करना हो तो टेबल एरिया सेलेक्ट कर लेंगे एंड फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, रो ब्रैकेट क्लोज इनटू कॉलम का फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, कॉलम एंड टैब की दबाकर कॉलम का सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ हमारा टेबल आ चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप डाटा एंट्री करते हैं एक्सेल शीट के अंदर तो रिपीट कंटेंट टाइप करते हैं, जैसे कि सिटी रिपीट टाइप होती है तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं? सिंपल से हम पूरी को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर डाटा में जाते हैं एंड यहाँ पर मिलेगा डाटा वैलिडेशन एंड मिलेगा डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद हम सेकंड टैब में जाएंगे जहाँ सिटी डली हुई है एंड सारे को सिलेक्ट कर लेंगे एंड फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए लिस्ट बन चुकी। अब आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सिलेक्ट कीजिए सिटी को और आपका काम हो गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपनी नेम लिखे हुए हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंपनी नेम चेंज करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे उसकी अक्रेंसेस पता चल जाती है, टोटल कितनी है। वो जो कंपनी नेम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग, और उसकी अक्रेंस नंबर बाई नंबर आ रही है। तो इसी तरीके से ये मैंने टेबल बनाई हुई है और ये डायनामिक है। जैसे ही मैं चेंज करूँगा अपने आप चेंज हो जाएगा, उसकी अक्रेंस निकल जाएगी।
लगा ली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्रोम पे जाके इसको सर्च करता हूँ, इसकी पॉपुलेशन। तो जब मुझे पॉपुलेशन यहाँ पे मिल जाती है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से तो मेरा काफी टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, इसको डेटा में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन जियोग्राफिक, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पॉपुलेशन नजर आएगा, बस यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे इस पे। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में आपके पास सारी पॉपुलेशन आ जाएंगी। ये गलत जगह चलेगी तो आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके इस साइड ले आओगे, रिप्लेस। Want to save some of your time and stop manually entering each grades with the lookup table given above? I bet you do. Well, for this all you got to do is put equal to and type lookup. Open a bracket, you could see various arguments there. So lookup value, well it is my first cell, so copy that. Put a comma and you could see the next argument, which is lookup vector. So for that, just copy the percentage table or whichever table you want to look up it, lock it with F4. Now put a comma and you could see the last argument, which is result. So for that, copy that and also lock it with F4. Now close the bracket and press enter. Well, just copy, drag and paste to others and you could see how easy it is to enter grades using a lookup table given. For more such videos, like, share and subscribe our channel. जब आप एक्सेल के अंदर अकाउंट नंबर डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12 डिजिट या 14 डिजिट का अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट आ जाता है। तो प्रॉब्लम आती है कि अकाउंट नंबर हम कैसे टाइप कर सकते हैं या 14 या 12 डिजिट कैसे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ड्रैग डाउन करेंगे कोई भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो सिंपल से आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पर सभी को एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ आप टाइप करेंगे एंड यहाँ पर जनरल है, इसको आप नंबर फॉर्मेट में कर देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, 0 रखना है तो रख लीजिए, अगर हटाना है तो आप 0 हटा सकते हैं। 0 हटाने के लिए आपको यहाँ पर डिक्री डेसिमल पर क्लिक कर देना, 0 हट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कोई भी अकाउंट नंबर टाइप करेंगे 14 15 16 कोई भी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए कितने भी नंबर का आप डिजिट टाइप कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मेट चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपनी नेम लिखे हुए हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंपनी नेम चेंज करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे उसकी अक्रेंसेस पता चल जाती है, टोटल कितनी है। वो जो कंपनी नेम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग, और उसकी अक्रेंस नंबर वाइज नंबर आ रही है। तो इसी तरीके से ये मैंने टेबल बनाई हुई है और ये डायनामिक है। जैसे ही मैं चेंज करूँगा अपने आप चेंज हो जाएगा, उसकी अक्रेंस निकल जाएगी।